Hello students, today I am going to explain the another topic of journey inside the atom. Today's topic is isotopes. It is very important topic for class 9th. Isotopes means same atomic number but different mass number. First point. Second, same number of protons, same number of electrons बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अगर आपको ये मालूम है कि न्यूट्रॉन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज द कॉज ऑफ आइसोटोप्स एंड सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट मास नंबर, different physical properties such as melting point, boiling point, density, because due to different masses. Different nuclear properties is due to different nuclear structure. Then some examples like carbon 612. So first of all, calculate the number of neutrons. How to calculate? So A minus Z. So 12 minus 6 equals to 6. And N by P ratio is 1. And in C14, N by P ratio is more than 1. If N by P ratio is more than 1, the element is radioactive. What do you mean by radioactive element? So radioactive elements are those, they have a tendency to emit some radiations like alpha, beta and gamma. Non-spontaneous emission of radiation without any initiation is known as radioactivity. An element responsible to lose alpha, beta and gamma is known as radioactive element. So out of these two, carbon 12 and carbon 14, which one is radioactive? 14 is a radioactive. Why? Because N by P ratio is more than 1. Another example, isotope of hydrogen is protium, deuterium and tritium. Atomic number 1, 1, 1. Atomic number same atomic number means Z equals to same number of Z. If Z is same, number of proton is same, number of electron is same, but number of neutrons are different. How to calculate number of neutrons? So A minus Z, A minus P, A minus E, any formula is used to calculate the number of neutrons. So protium is the only element have no neutron. In case of deuterium, the number of protons, number of electrons and number of neutrons are same. Same number of electrons, protons and neutrons in second isotope of hydrogen, that is deuterium. So same number of protons and electrons and different number of neutrons. So what is the cause of isotope? Same number of different number of neutrons. Then most important part is application of radioisotopes. So first of all, we know the application of protium. So protium is used in pulp inhibitors, treatment of acidity, illness. Deuterium is used in coolant in nuclear reactor, drugs, tracing, NMR, nuclear magnetic resonance spectroscopy, nuclear power plants, and tritium is used in controlled nuclear fission, nuclear weapons and self-powered lighting. Then some other use of isotopes, uranium 235 is used in a nuclear fuel, cobalt 60 in treatment of cancer, phosphorus 32 blood cancer known as leukemia, and I-131 thyroid disorder and disease is called goiter. Then carbon 14 is used in carbon dating. I-127 is also used in a medicine, that is tincture of iodine. Tincture of iodine is used as a medicine. डायग्नोसिस हम करते हैं इससे, थायराइड डिसऑर्डर, ग्वाइटर आपको हमने बता दिया. टिंचर ऑफ आयोडीन में आयोडीन का आइसोटोप यूज़ हो जाएगा. देन
I sodium 24 is very important. It is used in industries to find out the leakage. अगर कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारा जो है काफ़ी डेंजरस है, कोई पेट्रोल है, डीजल है, कोई भी हमारा तेल है या गैस पाइपलाइंस में कहीं भी लीकेज है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं सोडियम 24. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है, इसके बेसिस पर आप देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है. जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है एनालिसिस कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. सो आप इसमें बता देंगे आपको करना है. ड्यूटेरियम इसका आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइएस्ट N/P रेशियो. ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है आपके लिए, एप्लीकेशन बेस्ड है. इसमें आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जैसे हमने इसमें निकाला है N/P रेशियो 2 आया है जो मैक्सिमम है. आंसर यही होगा. यूरेनियम में 143 डिवाइडेड बाई 92 लेस देन 1 है. कार्बन 14 आइसोटोप में N/P रेशियो 8/6 1.33 है. और इन केस ऑफ रेडियम 134/88 अगेन यह लेस देन 1 है. तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ट्रीटियम. Then the number of valence electrons determines physical properties of element, chemical properties of the elements, both physical and chemical properties, neither physical nor chemical. तो इसका आंसर होगा chemical properties because valence electron is responsible for bonding or reaction. Which of the following nucleus does not contain neutrons? So आपको टिप्स पर याद होगा कि इसमें होता है प्रोटियम. Only one element in the universe have no neutron, that is protium. Then I-131 is used in the treatment of leukemia, that is blood cancer. The correct answer is A. इसका correct answer हो गया A. So please identify answers also. Then which isotope is used in carbon dating? तो इसमें आपको हमने बताया था C14. अगेन आपको हम एक बार इसको रिकैप्चुलेट कर देते हैं इंटायर प्रॉपर्टीज़ को. कोई बोले कि व्हाट इज़ आइसोटोप्स, तो आपको बोलना है कि आइसोटोप्स मीन्स एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. एग्जाम्पल्स आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम. आइसोटोप ऑफ कार्बन 12, 13 एंड 14. आइसोटोप ऑफ क्लोरीन. और सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोटोप्स आपको जानना है कि सेम एटॉमिक नंबर, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, same number of extra nuclear electrons, same electronic distribution, same chemical properties, but different mass number and different number of neutrons. Cause of isotope is different number of neutrons. They have different physical properties such as melting point, boiling point, density, because they are different masses. Also have different nuclear properties because they are different nuclear structure. So carbon 14 radioisotopes but carbon 12 is not radioisotope. इसको हम डिटरमाइन करते हैं N/P रेशियो से. एप्लीकेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसमें से आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, एप्लीकेशंस भी आते हैं, एनालाइज करने भी आते हैं. आप कैलकुलेट करना है, प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. सो नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आइसोबार्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.